Welcome to GATE 2021 Conclave, and for electronics engineering you are watching third part. In this video we will discuss about the core subjects. Electronic devices and circuits will be discussed by Ramesh Sir and Suneel Kumar. Analog will be discussed by Mr. Iftequar, and digital electronics will be discussed by Mr. Rajarao Shastri, and computer organization और microprocessor section will be discussed by Mr. Vijaya Kumar. तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि what to study, how to study, from where to study, and what is difficulty level and what is the source of study. Each and every aspect of these subjects let us discuss. Welcome friends, my name is Shastri. I am a senior faculty of Digital Electronics and Advanced Electronics. Right, I am an ex-IES. This is about me. I am MTech in VLSI from IIT Madras. I have got 10 years of teaching experience. I am teaching in MADEEASY since 2014. Okay, so I will be taking up Digital Electronics and Advanced Electronics and Microprocessors. पहले पढ़ा था, but now I am mostly limited to Digital and Advanced Electronics. Okay, right. So now let's see the syllabus of GATE 2021 digital circuits. Digital circuits में syllabus कुछ भी ज़्यादा change नहीं हुआ, it's mostly the same. So if you just observe here क्या क्या है इसमें, what is the syllabus you are having? You are having same number systems. Okay, this is number systems. Extra क्या है? Floating point numbers is only the extra topic. ठीक है? So yellow color में whatever I am showing is the only extra topic. Remaining things as it is same. So what is the syllabus broadly? Number systems, combinational circuits. यानी combinational circuits में क्या क्या आता है? K-map, the K-map simplification, multiplexers, decoders आप check कर सकते हैं. ये these are very normal arithmetic circuits. Okay, decoders. Right, ठीक है. उसके बाद then we are having sequential circuits. Next data converters, A to D, D to A converters. Next semiconductor memories, okay, ROM, RAM, SRAM, DRAM and CMOS circuits, CMOS implementations. ठीक है. एक और बार देखते हैं सिलेबस में. एक्चुअली डिजिटल का अगर सिलेबस देखते हैं तो क्या क्या है इसी में. पहला तो नंबर सिस्टम्स हैं. उसके बाद नंबर सिस्टम्स के बाद अगर देखेंगे तो लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या क्या है भाई देखिए, मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, दिस एडर्स है, सबट्रैक्टर्स, ये सब है. उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट भाई के 100% क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में 4 मार्क्स पक्का फ्रॉम दिस टॉपिक एलोन. अब यू राइट के गेट एग्जाम में फाइनाइट आजकल क्या पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, फाइनाइट स्टेट मशीन्स. फाइनाइट स्टेट मशीन एक पूछ रहा है, ठीक है, और सेटअप टाइम, होल्ड टाइम पे क्वेश्चन दे रहा है. ठीक है, बट फ्लिप फ्लॉप इस टॉपिक से पक्का मान के चलिए 4 मार्क 100% आएगा. 4 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक इज डैम श्योर. ए टू डी कन्वर्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट के सैम्पल एंड होल्ड सर्किट ए टू डी कन्वर्टर से भी इंपॉर्टेंट है. सो ही इज रफली इफ यू कैन जस्ट सी यहाँ पे 1 मार्कर या 2 मार्कर पूछ सकता है. अंडरस्ट, यू कैन आस्क 1 मार्कर और 2 मार्कर. सो इसमें से ठीक है, अभी ये नया टॉपिक है. इसमें ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अब तक तो नहीं था गेट में, इसी में तो नहीं था, बट ये नया ऐड हो गया है. उसी प्रकार ये क्रिटिकल डिले जो है ना, ये भी पहले नहीं था. पहले था एक्चुअली, क्वेश्चंस वर देयर बट स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया. ये हम ऑलरेडी कर रहे थे क्लास में, बट स्पेसिफिकली हम ये नहीं बोलते थे कि क्रिटिकल डिले कैलकुलेशन. अब ये क्रिटिकल पाथ डिले कैलकुलेशन का नाम दिया है. तो इसमें से इस बार क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों में से. वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऑल्सो, वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल पाथ डिले ऑल्सो. बाकी तो सिलेबस एज इट इज है. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप किस पे फोकस करेंगे, याद रखिएगा सीक्वेंशियल सर्किट्स पे. पक्का गेट एग्जाम में 4 मार्क आएंगे ही आएंगे. इस टॉपिक से 4 मार्क 100%, 99 भी नहीं है, 100% पूछेगा. ठीक है, तो बाकी इसमें से 1 मार्क 2 मार्क पूछ सकता है, और एसराम डीराम का भी पूछता है, कभी छोड़ देता है. ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. इफ़ यू जस्ट सी हियर, okay, let's take up say for example this green color. Okay, this CMOS is also very important. Okay, हम ये लॉजिक फैमिलीज में पढ़ते हैं. CMOS में एक अलग से टॉपिक से पढ़ाता हूँ इन द नेम ऑफ लॉजिक फैमिलीज. ओके, लॉजिक फैमिलीज के नाम से पढ़ाता हूँ, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. अंडरस्टूड, ये CMOS जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछेगा. तो अगर रफली डिजिटल को एनालाइज करते हैं, बाकी सब बहुत आसान है. 2 चीज़ तो पक्का याद रखिएगा. तो पहला है CMOS इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट्स. ये दोनों सीख लेंगे, कम से कम 5 मार्क तो आ ही जाएंगे गेट एग्जाम में. पक्का 5 मार्क्स विल बी कमिंग फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स प्लीज. ठीक है, ये CMOS को मैं उसने क्या किया है, CMOS को कॉम्बिनेशन में दिया है. CMOS को कॉम्बिनेशन में दिया है, बट मैं अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा कॉल्ड लॉजिक फैमिलीज. प्लीज अंडरस्टूड, लॉजिक फैमिलीज में पढ़ाते हैं. ठीक है, क्योंकि CMOS के साथ और भी कुछ और पढ़ाते हैं, या पास ट्रांजिस्टर लॉजिक्स के और भी कुछ चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ के अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ठीक है, राइट.
ठीक है। तो अब नया चीज क्या क्या ऐड हुआ है, तो एक दो ही टॉपिक है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो एकदम नया है, ये तो पहले नहीं था सिलेबस में, अभी ये दिया है। तो इस बार वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, यहाँ से अपन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पहले भी सिलेबस में था, बट नया नाम दिया है। ये क्रिटिकल पाथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पहले से ही था कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। अब ये क्या किया है, स्पेसिफिकली नाम दिया है, तो इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक्सपेक्टेशन इस बार वी कैन एक्सपेक्ट 2 मार्कर इन दिस, ठीक है। तो ये नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, तो ना इसका वेटेज देखिएगा कि लास्ट 5 इयर्स का मैंने क्या किया, समरी दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें से ओनली सिंगल सेट, इसमें एक ही सेट है, ठीक है। इसमें कोई सेट ही नहीं है, सिंगल सेट, अंडरस्टूड, सिंगल सेट है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल देखिएगा तो ये 4 क्वेश्चंस, अंडरस्टूड, 4 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, अंडरस्टूड। सो 4 2 सर 8 + 2, यहाँ पे 10 मार्क्स टोटल। सो मैं यहाँ पे 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 4 प्लस दिस इज 2 2 सर 4 प्लस, यहाँ पे 8 मार्क है। सो ऑन एन एवरेज इफ यू सी 8 मार्क्स 9 मार्क्स का वेटेज तो रहता ही है, पक्का 8 मार्क तो होगा ही होगा। इसमें देखिएगा, सो ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 का मतलब 4 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये, ओके। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से दिया, अंडरस्टूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे 4 2 सर 8 + 3 11 मार्क, अंडरस्टूड, 11 मार्क। सो ऐसा है, अंडरस्टूड, ऐसा है। यू कैन जस्ट सी एवरेजली 8 to 9 मार्क्स तो आ ही जाएगा पक्का, 8 मार्क तो पक्का होगा। सो कभी कभी 9 10 11 12 तक जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज प्लीज, अंडरस्टूड। सो एवरेज मार्क को देखेंगे तो 9 मार्क्स है, तो कम नहीं है। 100 मार्क का पेपर में 9 मार्क्स मीन्स इट्स डिसेंट वेटेज। एक और चीज, डिजिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, फ्रॉम योर कोर, इट्स वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स। रीजन क्या है, ठीक है, आपका सेलफोन, लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरीथिंग वर्क्स ऑन डिजिटल। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, एवरीथिंग इज अल्टीमेटली डिजिटल प्रोसेसिंग ओनली, राइट। सो तो ये है रफली वेटेज फॉर लास्ट 5 इयर्स प्लीज, अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। तो एवरेज देखेंगे इस साल 2020 में कितना है, 10 मार्क का पूछा है, चार क्वेश्चन दिया है 2 मार्कर का, और 2 मार्क्स ये दिया, 8 + 2 10। सो दिस इज रफली 8 to 9 मार्क्स इज द एवरेज वेटेज यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, राइट। तो नाउ अभी 3 तरह के क्वेश्चन है भाई। वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो बचपन से हम जानते हैं ऑलरेडी, मल्टीपल चॉइस क्या है देखते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, अभी एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यू आर हैविंग नेगेटिव मार्किंग, अंडरस्टूड, इसमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप जानते होंगे, एंड यू शुड नो इट, प्लीज यू रीड इट योरसेल्फ, ठीक है। सो ना एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया है, ऐसा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -17, एक सिंपल क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है, जस्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -17 पूछ रहा है, सो सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 17 रिप्रेजेंट इन बाइनरी। सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए रिप्रेजेंट इन बाइनरी, फर्स्ट स्टेप क्या है, बाइनरी में लिखो, ओके। कैसे लिखेंगे भाई बाइनरी में, 17 को कैसे लिखेंगे, सो 1 0 0 0 1 रिप्रेजेंट 17, ओके। दिस इज एन अनसाइंड नंबर, ओके, इट्स एन अनसाइंड नंबर प्लीज, ओके। बट आपको क्या चाहिए, -17 चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा याद रखिए 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, ओके। 2's कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखिए, 2's कॉम्प्लीमेंट में हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेक पॉजिटिव फर्स्ट, ओके। हमेशा पहले पॉजिटिव करते हैं, अंडरस्टूड, पॉजिटिव करना जरूरी है। तो क्या करता हूँ, एक साइन भी ऐड कर देता हूँ, ओके, और ये नंबर बनेगा, राइट, 1 0 0 0 1, दिस बिकम्स +17, ओके। तो फर्स्ट पॉजिटिव बनाना जरूरी है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में, डायरेक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। बट नेगेटिव कैसे मिलेगा, टेक 2's कॉम्प्लीमेंट, नाउ यू परफॉर्म टेक 2's कॉम्प्लीमेंट, ओके। नाउ टेक 2's कॉम्प्लीमेंट, नाउ व्हेन यू टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टेल मी व्हाट इज द आंसर, के 1 0, ओके, 1 1 1 0, ऐड 1 टू इट, तो आंसर क्या होगा, 1 0 1 1 1 1, ओके। सो दिस इज नथिंग बट -17, अंडरस्टूड, ये है -17 2's कॉम्प्लीमेंट प्लीज, अंडरस्टूड, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसका केवल आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, इसका आंसर होगा बी, सिंपल। इसमें यानी इसका मतलब सिंपल, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में क्या है, इज आस्किंग द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -17। सो ये -17 जो है सबसे पहले डेसिमल है ना, फर्स्ट दिस नंबर इज अ डेसिमल नंबर, ओके। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये है तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। एमसीक्यू का मैंने क्या किया कि एग्जांपल लिया है, अंडरस्ट एग्जांपल लिया है। तो बेसिकली इफ यू सी -17 एक डेसिमल नंबर है, उसको सबसे पहले क्या किया, साइन हटा दिया, ओके, 17 लिया, ठीक है, केवल 17 लिया है, माइनस हटा दिया, उसको रिप्रेजेंट इन बाइनरी, सबसे पहले बाइनरी में लिखा, ठीक है, ये है 17, ये जानना चाहिए, तो बेसिक्स है, यू माइट बी नोइंग कैसे करते हैं। तो ये 17 है,
ठीक है। अब इस 17 को हम क्या करना चाहिए, -17 चाहिए ना, आपके पास तो केवल 17 अनसाइंड नंबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेक पॉजिटिव फर्स्ट। हमेशा याद रखिए जब भी टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखना चाहते हैं कि फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, ऐड अ साइन बिट, इसको बोलते हैं साइन बिट। ओके, जीरो करने से क्या हो गया है, ये पूरा नंबर जो है +17 हो जाएगा। अगर आपको -17 चाहिए तो फिर क्या करेंगे, टेक टूस कॉम्प्लीमेंट, तब यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड। सो यानी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा, ओनली सिंगल ऑप्शन। अंडरस्टूड। एनी रॉन्ग आंसर यू डू, यू विल गेट अ नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। आई हैव टेकन एन ए सिंपल एग्जांपल फॉर दिस सिंपल नंबर सिस्टम से दिस टूस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन लिया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। दिस इज सुपर। ओके, ये पहले था 2003, 2002, 2003 से पहले था गेट में मल्टीपल सेलेक्ट, यानी एक ही क्वेश्चन के एक ऑप्शन हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, बढ़िया। अंडरस्टूड, सुपर क्वेश्चन। So this question, okay, will have out of the 4 choices, 1 or more will be correct. इसमें negative marking नहीं, understood? So there is no negative marking and there will be no partial marking. यानी इसका समझा देता हूँ, simple, understood, simple। देखिए, let's see is this interesting please। ये interesting है, पहले था वापस दोबारा आ गया। understood? उसको भी explain करने के लिए मैंने क्या किया है, एक simple question लिया। okay, an equivalent of 2's complement representation of the 2's complement number 1101 is, ठीक है। तो यानी इस 1101 का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ओके, 3 हो सकते हैं, 4 के चारों हो सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, आई मीन डिफरेंट मॉडल। इसमें फंसेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंसते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज एन एरिया वेयर यू शुड फोकस मोर। अंडरस्टूड, दैट इज वेयर MEDEEASY विल हेल्प। ओके, सो नाउ इफ यू सी 1101, तो दिस इज अ टॉपिक व्हाट आई हैव डन। मैंने एक टॉपिक के एक बार आप यू कैन सी अवर क्लासेस, ओके, एक टॉपिक पढ़ाया है, दिस इज कॉल्ड द साइन एक्सटेंशन। मैंने इसी पे सिंपल क्वेश्चन लिया, ओके, एक टॉपिक लिया है साइन एक्सटेंशन। अंडरस्टूड, साइन एक्सटेंशन से एक सिंपल क्वेश्चन बनाया, ठीक है। यानी ये 1101, ये कौन से ऑप्शंस में 1101 किसके बराबर है। आप ऑलरेडी आप जानते हैं, आपके पास एक 4 बिट नंबर है 1101, इट्स अ 4 बिट नंबर। ओके, अगर इस 1101 को मैं एक्स्ट्रा 1 ऐड करता हूं, यहां पे देखिए, सपोज मान लीजिए हम यहां पे 1 लगाते, तो इसका वैल्यू चेंज होगा कि सेम रहेगा, ओके, सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड द साइन एक्सटेंशन। अंडरस्टूड, साइन एक्सटेंशन, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे। अंडरस्टूड, मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, जस्ट टेकन अ क्वेश्चन। अंडरस्टूड, क्वेश्चन लिया है, टूस कॉम्प्लीमेंट से ही लिया है, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे लिया है, द क्वेश्चन बेसिस इज बेसिकली साइन एक्सटेंशन। ओके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन प्लीज गो टू अवर कोर्सेस एंड सी, कोर्स एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही डिटेल में कराया हूँ वहाँ पे, ठीक है। सो नो इफ यू सी 4 बिट नंबर, अंडरस्टूड, ये दोनों सेम है, ये 4 बिट नंबर और ये 6 बिट नंबर जो है, आप वंस यहाँ पे 1 ऐड करने से वैल्यू नहीं बदलेगा, एकदम सेम रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने लिया है। तो आप ही चेक कीजिए 1101 का कौन क्या बराबर हो सकता है। 1101 का, इफ यू जस्ट चेक 1101 किसके बराबर होगा, ठीक है। सो इफ यू जस्ट सी, अंडरस्टूड, वी जस्ट सी, सो 1101 एज इट इज रहना चाहिए, 1101 एज इट इज रहना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे क्या किया है, देखिएगा, ओके, आपने एक्स्ट्रा 1 दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 लिया है, तो दोनों सही आंसर होंगे। अंडरस्टूड, दोनों सही आंसर होंगे। ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर भी सही नहीं है। अंडरस्टूड, सही नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, एक नहीं 2 ऑप्शन है। अंडरस्टूड, इस बार 2 ऑप्शन है, दोनों 1101 के बराबर है। अंडरस्टूड, दोनों 1101 के बराबर है। सो वी शुड आंसर मार्क क्या क्या करना चाहिए, बी को भी मार्क करना चाहिए, सी को भी मार्क करना चाहिए। मान लीजिए आपने क्या किया, केवल बी को मार्क किया, केवल बी को मार्क किया, सी को छोड़ दिया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इज नो पार्शियल मार्किंग। अंडरस्टूड, इसका मतलब क्या है, 2 ऑप्शन सही है, आपने एक ही मार्क करके आगे, मार्क्स विल नॉट गेट मार्क्स। अंडरस्टूड, दोनों के दोनों आप करने चाहिए, बट इसमें एडवांटेज क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अंडरस्टूड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ऑसम, प्लीज ऑसम। ओके, नाउ गेट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। अंडरस्टूड, गेट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइन एक्सटेंशन। अंडरस्टूड, सिंपल एग्जांपल के तौर पे एक टॉपिक लिया है, साइन एक्सटेंशन, साइन को एक्सटेंड करना। यानी इसका मतलब क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा तो क्या आपको क्या समझ में आया, इन चारों में से कौन सा नंबर इसके बराबर है, बस यही क्वेश्चन है। हमने एक नंबर लिया है 1101, ये चारों ऑप्शन में से कौन से नंबर इसके बराबर होगा। तो कैसे होगा, देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या किया, 1101 लिया है, ठीक है, लिया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1101 को अगर एक्स्ट्रा 1 ऐड करते हैं तो आंसर नहीं बदलेगा, एकदम सेम रहेगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ क्या किया, 1101 कहाँ है चेक किया, ओके, यहाँ पे 1101 है, ये एक्स्ट्रा 1 ऐड करने से आंसर नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। अंडरस्टूड, सेम रहेगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक नहीं 2 ऑप्शन है, दोनों को मार्क करना पड़ेगा, एक मार्क किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये तो पहले से ही है न्यूमेरिकल, फिल इन द ब्लैंक, अंडरस्टूड। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक प्लीज, अंडरस्टूड। फिल इन द ब्लैंक मॉडल क्वेश्चन पहले से ही है, इसमें खास कुछ है नहीं, बट इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो इसमें भी मैंने क्या किया है, सिंपल एक एग्जांपल लिया, अंडरस्टूड, एग्जांपल लिया है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक। द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 16-bit 2's complement form, okay. When you say 2's complement, this question is this is question, if you just observe here, this question is based on the range, okay. Range आपने नाम सुना होगा, range of 2's complement form, okay. So 16-bit नॉर्मली रेंज ऑफ 2's complement form क्या है, उसी पे मैंने क्वेश्चन बनाया है। रेंज ऑफ 2's complement form क्या है, ओके। सो माइनस 2 power n minus 1, ओके, टू प्लस 2 power n minus 1 आपको याद होगा, दिस इज द रेंज प्लीज, अंडरस्टूड, दिस इज नथिंग बट द रेंज। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन पूछा है। 1 मार्कर हो सकता है, 2 मार्कर हो सकता है, ये पहले से ही है, 2014 से ही ये न्यूमेरिकल टाइप चल रहा है, नया कुछ नहीं। बट दिस मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी आपके पास 16 बिट का नंबर है, आप कितना मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। रेंज में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, प्लस 2 power 16 minus 1, दैट इज द आंसर। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आपको मिलेगा शायद 32767, अंडरस्टूड। ये है आपका नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। मैक्सिमम का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो रेंज पे सिंपल क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। सो 2's complement रिप्रेजेंटेशन 16 बिट में कितना मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो यू कैन प्लीज सी अवर कोर्सेस, अंडरस्टूड, टेक अवर कोर्स, डेफिनेटली ये सब डिटेल, बहुत डिटेल में समझाया, प्रूव भी किया गया है, सो यू इजीली विल अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। सो ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। सो ना उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, सीक्वेंशियल सर्किट्स पक्का 100% इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी 4 मार्क आएंगे ही आएंगे, 4 marks in gate exam, damn sure. Data converter is also important, you can expect a 2 marker here, understood, 1 marker 2 marker expect कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इसमें एक और चीज बताना भूल गया, CMOS, ये भी 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंडरस्टूड, 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक। CMOS भी पूछेगा ही पूछेगा, बिकॉज विदाउट CMOS देयर इज नो फैब्रिकेशन टुडे। सो 100% CMOS पे ही पूछेगा। CMOS ऐसा नहीं कि बहुत आसान, आई मीन आसान है, बट CMOS में डिफरेंट वेराइटीज है, पास ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांसमिशन गेट्स, अंडरस्टूड, स्टैटिक CMOS सर्किट्स, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन CMOS वेयर ही कैन गेट आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस, अंडरस्टूड, ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये है चीज भाई, अंडरस्टूड। सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक और बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है, तो देखिए, राइट। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप प्लीज। यहाँ से मेरा नाम तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गेट सिलेबस एज इट इज है, 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया है, एक्चुअली एक ही चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ओके। ये क्रिटिकल पाथ डिले पहले भी था, अभी भी है, ठीक है, बस नाम एक्स्ट्रा दिया है। पहले नाम नहीं दिया था सिलेबस में, क्वेश्चन तो दे रहा था, अभी एक्स्ट्रा नाम दिया है, ठीक है। तो एक बार ये दोनों चीज़ देखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस टू। तो ये ऑलरेडी बता दिया है, तो इसमें यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्कर प्लीज, अंडरस्टूड, 1 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, एवरेज इसका देखेंगे, 9 मार्क्स इज द एवरेज, 8 to 9 मार्क्स इज द एवरेज जनरली यू गेट, ठीक है। तो ये वेटेज वगैरह आप देख सकते हैं, यू कैन डू विद दिस, ऑलरेडी हमने गेट बुक में दिया है, राइट। नेक्स्ट, ये MCQ ऑलरेडी बता दिया, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस क्या है, MCQ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, इसमें एक ऑप्शन सही है, ओनली सिंगल ऑप्शन प्लीज, एक ऑप्शन ही सही है, ठीक है, MCQ। नेक्स्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल इज दिस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, अंडरस्टूड, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन सबसे के दी बेस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, दैट्स ऑसम, ओके। सो नाउ यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है जिसमें 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। सो दोनों मार्क करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। सो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल, ये तो पहले से भी था, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। सो न्यूमेरिकल सिंपल एक एग्जांपल भी लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिया हूँ, ठीक है। धन्यवाद माय फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार तिवारी गेट कॉन्क्लेव 2021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। Before I start to discuss about the changes and importance of the subject in GATE examination, I would like to introduce myself. I have been associated with this prestigious organization, MADEEASY Group, from last 10 years. It is more than 1 decade of association with this organization, and headed the Department of Electronics and R&D wing of this prestigious institute. Friends, the subject which I want to discuss is electronic device and circuits.
It is very important subject and a fundamental subject for the study of the other subjects. Like you need elementary knowledge of the EDC, then only you can develop a good content in analog electronics or advanced electronics. So it is very important from a scoring point of view, as well as it lay foundation for the other subjects also. So there are some changes in the syllabus of GATE 2021, and what are those changes, what are the additions and deletions that I want to discuss, and what are the important topics that also I want to discuss, and what are the various types of questions which are asked in this examination that we will discuss during the course of our discussion. So first of all, let us start to discuss about the syllabus of this subject. In 2021, as you know, the syllabus has been changed for this exam. So the new syllabus is given like this: energy bands in intrinsic and extrinsic semiconductor, equilibrium carrier concentration, and direct and indirect band gap semiconductors. Then when you come in the chapter named as carrier transport, so carrier means the transport of the electrons and holes. So there are the topics like diffusion current, drift current, mobility and resistivity, generation and recombination of carriers, Poisson's equations and continuity equations. Then next topic is PN junctions and Jenner diode, then VJT, MOS capacitor, MOSFET, LED, photodiode and solar cell. This is the syllabus of GATE 2021. अगर आप 2020 का सिलेबस देखेंगे तो फ्यू अदर टॉपिक्स वर आल्सो देयर इन द सिलेबस. वो कौन कौन से टॉपिक थे जो इस बार रिमूव कर दिए गए, उनके बारे में भी देख लेते हैं. अर्लियर the part of the syllabus was integrated circuit fabrication process, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन, इम्प्लांटेशन, फोटोलिथोग्राफी एंड ट्विन टप सीमॉस प्रोसेस पढ़ना होता था. हालांकि इससे आप पिछले सालों में भी देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे, लेकिन इस साल इसे सिलेबस से ही हटा दिया गया है. तो अब जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जो आईसी फैब्रिकेशन का पार्ट है वो आपको स्किप करके चलना है. सो you have to be very focused on the syllabus. Actually गेट क्रैक करने के लिए जो की पॉइंट है वो यही है कि an ordinary student crack this examination but he must have a laser like focus. सो लेजर लाइक फोकस रखने के लिए आपको सब्जेक्ट का क्या बाउंड्री है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है. आप देखें तो गेट में 85% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ओनली 15% स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं. जबकि मैं क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूं, मार्क्स रैंक तो वो दूसरी बात है, डिफरेंट चीज है. क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स के नियर अबाउट जरूरत होती है. डिफरेंट ब्रांचेस में 30 से 35 मार्क्स के बीच में चाहिए आउट ऑफ द 100, और 85% स्टूडेंट 30 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं. तो इस बात से आप ये कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होगा. लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें आप तो जो टॉपर होता है उसके मार्क्स 85, 90 एंड 95 की रेंज में होते हैं. समटाइम्स मैंने देखा है कुछ ब्रांचेस में 97.6 के आसपास भी मार्क्स हैं, यानी नियर अबाउट 100% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं. तो ऐसा क्या है कि कोई एक व्यक्ति 100% मार्क्स स्कोर करने की क्षमता रख रहा और 85% लोग स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं, 30 मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहे हैं. जबकि अगर आप वहीं यूपीएससी का सिलेबस देखें तो यूपीएससी में जो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स की जरूरत होती है, मैं आईएएस की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो 55 से 60% के बीच में होती है. और जो टॉपर के मार्क्स होते हैं वो भी बिलो 70% ही होते हैं, 65% के आसपास या 65 to 70% एट मैक्स. वहां आपको इतना वेरिएशन नहीं दिखेगा कि someone is scoring 30% and someone is scoring 95%. 95% कभी दिखेगा ही नहीं. तो इसका मतलब यूपीएससी और गेट के एग्जाम के स्ट्रक्चर में कोई बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, एंड वी मस्ट फोकस ऑन दैट डिफरेंस. आप देखेंगे तो गेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो जो भी सिलेबस की बाउंड्री डिफाइन की गई है उससे बाहर नहीं होगा. दैट इज विद इन द सिलेबस ऑफ द मेंशन्ड सिलेबस बाय देम. जो भी सिलेबस उन्होंने दिया है उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे वो, लेकिन जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी. जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस बहुत वास्ट है. अब उन्होंने अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको लिख दिया सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं. बहुत वास्ट सिलेबस है, जबकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता. मैं प्री को कंपेयर
कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को ऑब्जेक्टिव गेट एग्जाम से कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में वास्ट सिलेबस होने की वजह से स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, जबकि गेट में वेल डिफाइंड सिलेबस, वास्ट यहां भी है लेकिन वेल डिफाइंड सिलेबस है। तो वेल डिफाइंड सिलेबस को और पैटर्न को जो स्टूडेंट अच्छे से रीड कर लेता है वो 80-90% तक भी स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने बिना पैटर्न को रीड किए हुए, बिना सिलेबस को देखे हुए और इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो फिर वो 85% लोगों में लाई करेगा जो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक दिस एग्जाम इज कि यू शुड हैव वेरी फोकस्ड अप्रोच। आपको एकदम लेजर लाइक अप्रोच रखना है कि टू द पॉइंट, नॉट लेस देन द सिलेबस एंड नॉट मोर देन द सिलेबस। जो सिलेबस है वही पढ़ना है। तो इसलिए मैंने अपना डिस्कशन सिलेबस से स्टार्ट किया है। सो ये सिलेबस है और यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। जो सिलेबस है एग्जैक्टली उसी को पढ़िए। ठीक, अब आइए जरा देखते हैं, रिमूव्ड टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए। लास्ट 5 इयर्स का वेटेज देख लेते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि 100 मार्क्स का पेपर होता है गेट में, जिसमें 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड को, और 85 मार्क्स में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी क्लियर डिस्टिंक्शन है कि 13 मार्क्स की मैथमेटिक्स आएगी और 72 मार्क्स का इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को वेटेज दिया जाएगा। तो आउट ऑफ दो 72 मार्क्स, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट? पिछले 5 इयर्स का मैंने वेटेज लिया तो उसका एवरेज निकाला तो 9.64 मार्क्स, यानी 9 to 10 मार्क्स, समटाइम्स 8 मार्क्स हो जाएगा, समटाइम्स 11 मार्क्स तक चला जाएगा। तो 8 to 11 का बैंड आप कह सकते हो कि इस बैंड में ये सब्जेक्ट लाई कर रही है, और जो एवरेज आ रहा वो 9 से 10 के बीच में आ रहा है। आप देखें तो 2020 में, अच्छा, क्वेश्चन दोनों तरह के पूछे जा रहे हैं। 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और 2 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 2020 में देखेंगे तो एक ही सेट में एग्जाम हुआ है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने नहीं रह गए हैं जितना 2016 वगैरह में हुआ करते थे। तो जब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ब्रांच में अपीयर करते थे तो 3 सेट्स में पेपर कराया जाता था, लेकिन अभी जो पेपर होता है वो एक ही सेट में हुआ, लास्ट जो एग्जाम हुआ। तो 2020 में सेट 1 ही था और उस सेट में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, यानी जो वेटेज था वो 10 मार्क्स का था। ठीक, 2019 में आप देखेंगे तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, जो वेटेज था वो 11 मार्क्स का था। ठीक, 2018 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क के और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी जो वेटेज आपको मिलेगा वो 9 मार्क्स का मिलेगा। एंड आउट ऑफ 72 है, आउट ऑफ 100 मत समझिए इसे, 72 मार्क्स की आपकी इंजीनियरिंग है और उस 72 मार्क्स में 9 to 10 मार्क्स का वेटेज इस सब्जेक्ट को मिला। देन 2017 में 2 सेट थे, एक सेट में 3 क्वेश्चन 1 मार्क के और 3 क्वेश्चन 2 मार्क के, दूसरे सेट में 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो जो एवरेज आया इन दोनों का वो लगभग एक पेपर में 9.5 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। इसी तरह से 2016 में आपके पास 3 सेट में पेपर हुआ था, तो पहले सेट में 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के एंड 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, दूसरे सेट में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तीसरे सेट में 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। एवरेज ले लो इन तीनों सेट का तो 8.7 मार्क्स के आसपास आ रहा है, यानी मिनिमम 8 मार्क्स, मिनिमम 8 भी नहीं है, उससे ज्यादा ही है। तो आप 9 to 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज मान करके चलिए, दैट इज अ ह्यूज वेटेज फॉर दिस सब्जेक्ट। दूसरी एक अच्छी बात है इस सब्जेक्ट की कि इट इज वेरी मैथमेटिकल सब्जेक्ट। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही न्यूमेरिक नेचर के और बहुत ही एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अगर आप ठीक से इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो एम्बिग्विटी नहीं रहती है क्वेश्चंस में एंड यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। जितने भी इसके 9-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के साथ कि अगर आप इसको थ्योरेटिकल एंगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स में इंटर नहीं करेंगे, चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे कि चलिए जो जंक्शन में बिल्ट इन पोटेंशियल को मैं रट लेता हूं, तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपने जंक्शन में बिल्ट इन पोटेंशियल
पोटेंशियल का फार्मूला रट लिया कि VT ln Na Nd अपॉन Ni स्क्वायर, ये रट करके आप चले गए, तो ये रटा आपने पीएन जंक्शन के लिए, वहां पर जाकर के आपसे बोलेगा कि पीएन जंक्शन नहीं जी, P प्लस या P माइनस के बीच में जंक्शन बनाइए, या N प्लस और N के बीच में जंक्शन बनाइए, और अब आप कैलकुलेट करिए कि व्हाट इज द बुल्ट इन पोटेंशियल। व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू कि अगर आप मेमोराइज करने वाली अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो धोखा हो जाएगा। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। बहुत हरी में मत रहिएगा कि बहुत शॉर्टकट के साथ जाने की कोशिश करिए या बहुत कुछ याद करके जाने की कोशिश करिए, फार्मूले धोखा दे देंगे आपको प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खास करके गेट एग्जाम में। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप देखो या अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप देखोगे तो बड़ा सरफेस पर या थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट गेट में इसमें बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यू नीड टू डेवलप इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एंड यू कैन नॉट इग्नोर द सब्जेक्ट कीपिंग द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट इन माइंड। आप देखिए 10-11 नंबर का वेटेज आ रहा है, 9 नंबर के आसपास का एवरेज आ रहा है, तो यू कैन नॉट इग्नोर द सब्जेक्ट, यू मस्ट हैव टू डेवलप इन डेप्थ नॉलेज इन द सब्जेक्ट। सो आइए जरा आगे चलते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि 2021 में गेट कमेटी ने, IIT बॉम्बे ने ये मेंशन किया है कि 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला टाइप उन्होंने बताया कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, MCQ जिन्हें कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो MCQ होंगे इन पर निगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो -1/3 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो -2/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। सो पहली जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है दैट इज MCQ। एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर गेट 2014 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है पहले देखिए। इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ है और ये एक बेसिकली ग्राफ है जो ln रो i और 1 बाई टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ठीक। तो इन द फिगर ln रो i is plotted as a function of 1 by t, where रो i is the intrinsic resistivity of the silicon, t is the temperature and the plot is almost linear, ठीक। ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ है वो लगभग लीनियर है, यानी आप इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान करके चलिए। द स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट, आपके ऑप्शंस हैं बैंड गैप, एनर्जी ऑफ द सिलिकॉन, यानी स्लोप से आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो आई है और टेम्परेचर T है, ठीक है। तो टेम्परेचर 1 अपॉन टेम्परेचर और ln रो आई के बीच में मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, और वो ग्राफ एक लगभग लीनियर फंक्शन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस ग्राफ की जो स्लोप है, अगर हमें वो पता हो तो उस स्लोप से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके बैंड गैप, एनर्जी ऑफ द सिलिकॉन Eg, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी इन सिलिकॉन μn प्लस μp, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी इन सिलिकॉन μn प्लस μp का इनवर्स, एंड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये क्वेश्चन था। अगर आप मेमोराइज वगैरह करके जाएंगे तो इस साल के लिए इसको मेमोराइज कर लेंगे, लेकिन अगले साल वो चेंज कर देगा। अभी ln रो i के बीच में ग्राफ बनाया, हो सकता है अगले साल आपसे बोल देगा कि आप मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दीजिए। तो आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपके साथ ही सॉल्व करके इसको दिखा देता हूं। हमसे ये कहा गया है कि रो आई के लिए हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो पहले हमें रो आई ही पता हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं, जिन लोगों ने इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, Ni, Q and μn plus μp, this is the value of resistivity for intrinsic semiconductor, where Ni is intrinsic carrier concentration, Q is magnitude of electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and μn is electron mobility and μp is hole mobility। ये होती है resistivity की वैल्यू। अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन में बड़ी ध्यान से देखिए कि in the figure it is plotted as this, where rho I is this intrinsic resistivity, T is the temperature and the plot is almost linear, ठीक।
टेम्परेचर की रेंज क्या है ये नहीं मेंशन है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास हम चीज ज्यादातर डिवाइसेस को यूज करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर के आसपास जो मोबिलिटी का वेरिएशन होता है म्यू एन इज directly proportional to the minus 3 by 2, t to the power minus 3 by 2. So you can write it like this: mu n is equal to mu n naught, which is a proportionality constant and temperature independent, t to the power minus 3 by 2, and similarly mu p, that is equal to mu p naught and t to the power minus 3 by 2. ठीक, इस तरह से। अब यहां एक चीज जानना बहुत जरूरी है, मैंने ये कहा कि हमें रूम टेम्परेचर एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बहुत लो टेम्परेचर पर बात की जाए, बिलो द 100 केल्विन बात की जाए, तो फिर मोबिलिटी का वेरिएशन ऐसा नहीं होगा। बट नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द टेम्परेचर इफ इन द क्वेश्चन, देन हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर पर ही बात कर रहे हैं। आइए, एनआई हम लोगों को पता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है हमारा ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर एनआई स्क्वायर की वैल्यू होती है ई टू दी पावर माइनस ई जी नॉट अपॉन के टी। ये सिंबल्स में ए नॉट एक कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई जी नॉट एनर्जी बैंड गैप है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एनआई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। तो इसका जब रूट ले लोगे तो ए नॉट का रूट 1/2 टी टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस ई जी नॉट डिवाइडेड बाई 2 के टी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन आई। अब ये दोनों वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर दें यहां पर, तो रो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट 1/2 टी टू द पावर 3/2 टी टू द पावर 3/2 एंड ई टू द पावर माइनस ई जी नॉट डिवाइडेड बाई 2 के टी, एंड यहां पर क्यू ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज टी टू द पावर माइनस 3/2 एंड म्यू एन नॉट प्लस म्यू पी नॉट। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब एक चीज देखिए यहां पर कि ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू। 1 अपॉन ऑल दीज कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन विल रिमेन सम कांस्टेंट, लेट अस सपोज दैट इज सी। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक नया कांस्टेंट आ रहा है जिसे मैं सी कह रहा हूं। ठीक, टी टू दी पावर 3/2 एंड माइनस 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी ई टू दी पावर ई जी नॉट अपॉन 2 के टी। ठीक है, ये रो आई हो जाएगा। हमें रो आई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें जो ग्राफ दिया गया है वो ln रो आई क्या है, तो दोनों तरफ का नेचुरल लॉग ले लीजिए। सो ln रो आई इज इक्वल टू ln सी प्लस, इसका लॉग लेंगे आप तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो इसका लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा ई जी नॉट अपॉन 2k इंटू 1 अपॉन टी। जो हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वो ये y एक्सिस पर है, ठीक, और ये x एक्सिस पर है। ठीक, तो ऑब्वियसली ये स्लोप m हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट c हो जाएगा। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन y mx प्लस c टाइप का। ठीक, तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो ई जी नॉट बाई 2k होगी। आइए जरा क्वेश्चन में चलते हैं कि जो स्लोप है वो ई जी नॉट बाई 2k है। स्लोप इज ई जी नॉट अपॉन 2k। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें इसकी वैल्यू पता होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, वो वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पता है। तो अगर स्लोप पता हो तो हम ईजी निकाल सकते हैं, और ईजी क्या है, बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू। तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, दैट विल बी द राइट चॉइस। तो इस तरह से आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रजिस्टिविटी पूछा, आप रटोगे कि इस कर्व की रजिस्टिविटी, इस कर्व का स्लोप रजिस्टिविटी देता है, अगली बार आपसे कुछ और वैल्यू पूछ लेगा, या अगली बार आपको मोबिलिटी के लिए रिलेशन डेवलप करा करके उससे कोई वेरिएशन कर देगा। तो यू मस्ट बी कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रांग कि जो कुछ भी पूछा गया उसको आप बता सके। तो ये पहली वैरायटी का क्वेश्चन था जिसे हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। दूसरा एक नया टाइप इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज एमएसक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं ये। इनमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से
एक भी सही हो सकता, दो भी सही हो सकते हैं, यानी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। और आपका क्वेश्चन करेक्ट तभी माना जाएगा जब जितने भी करेक्ट ऑप्शन हैं आप सारे टिक करोगे। सपोज 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं और उनमें से 2 आपने टिक किया और एक आप छोड़ दिए, तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर 4 में से 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो आपको तीनों को टिक मार्क करना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एमएसक्यू। अच्छी बात यह है कि एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत भी हो गया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, 0 मार्क्स मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो जरा देखिए एमएसक्यू में। कंसीडर एन एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट having p-type substrate with doping concentration of Na per centimeter cube। यानी एक MOSFET है जिसका substrate p-type है और substrate की doping दी हुई है। The thickness of the oxide layer is Tox and assume that there are no trapped charges inside। बड़े प्यार से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, एक एक चीज क्वेश्चन में वैल्यू रखती है, हर एक चीज का अपना सिग्निफिकेंस होता है। Inside the oxide layer, if the source is connected at higher potential than that of the bulk, यानी उसने मेंशन किया है कि source voltage as compared to comparison to the bulk is greater than 0 volt, the threshold voltage BT of the MOSFET। अब इस सारी कंडीशन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन BSV, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन Na, एंड देन उसके बाद आपको दिया गया है कि डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Tox एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Na। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है। ठीक, सो आइए जरा देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मॉसफेट के केस में आपको पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, कि गेट पर अप्लाइड वोल्टेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू गेट इन्वर्जन लेयर, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन लेयर एट द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इंटरफेस। तो बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, फ्लैट बैंड कंडीशन को अचीव करते हैं गेट पर वोल्टेज अप्लाई करके। सो फर्स्ट थिंग कि हमें फ्लैट बैंड वोल्टेज की जरूरत लगती है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि डिप्लीशन रीजन का क्रिएशन करते हैं। तो Q डिप्लीशन चार्जेस और ऑक्साइड कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो तो आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड एट द गेट टर्मिनल मिल जाएगा for the creation of depletion region। and थर्ड स्टेप में हम रिक्वायर्ड सरफेस पोटेंशियल इंटरफेस पर डेवलप करते हैं, दैट इज 2πf। ठीक, अब VFB क्या है वो जरा देखिए। फ्लैट बैंड वोल्टेज की वैल्यू होती है मेटल सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन का डिफरेंस, दैट इज 5ms माइनस QSS डैश अपॉन Cox। यहां पर QSS डैश ट्रैप्ड चार्जेस हैं इनसाइड द ऑक्साइड। लेकिन अपने क्वेश्चन में देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर नो ट्रैप्ड चार्जेस। तो अगर कोई ट्रैप्ड चार्ज हमारे पास नहीं है तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप इस पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, 0। तो अब VFB की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5ms के बराबर हो जाएगी। डिप्लीशन चार्जेस की जो वैल्यू होगी, मैं इसको डेराइव नहीं करा रहा हूं, बाकी आपको डिप्लीशन रीजन में पॉइजन्स इक्वेशन लगा करके एंड देन वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल कैलकुलेट करते हैं एंड देन वोल्टेज प्रोफाइल कैलकुलेट करेंगे और उसकी मदद से सरफेस पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन के बिड्थ के बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे। जब डिप्लीशन रीजन की बिड्थ मिल जाएगी तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस डिप्लीशन रीजन में कितने चार्जेस हैं। तो वो जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी, दैट वैल्यू इज 2 epsilon s। epsilon s is permittivity of the semiconductor, Q into Na, and 2 phi f plus VSB to the power 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑक्साइड कैपेसिटेंस Cox एंड प्लस ये आपका 2 phi f। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू किसी इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए, एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट के लिए। अब अपने क्वेश्चंस को हम यहां पर कुछ और चीजें हम लोग ध्यान दें। Cox यानी ऑक्साइड कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन T ऑक्साइड। ठीक है, यानी परमिटिविटी ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर। और जो phi f होता है फर्मी पोटेंशियल, दिस इज KT/Q ln Na अपॉन Ni।
Na is acceptor concentration, Ni intrinsic carrier concentration, K Boltzmann constant, T temperature and Q is electronic charge. अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉसफेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन VSB, यानी हम VSB को वेरी कर रहे हैं, बाकी चीजों को टच नहीं कर रहे हैं। तो आप देखें इस एक्सप्रेशन में कि अगर बाकी चीजें सेम रहें और VSB को चेंज कर दिया जाए, VSB को बढ़ाएंगे, तो अगर VSB बढ़ाओगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। इट मींस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सोर्स टू बॉडी पोटेंशियल। इसे हम लोग बॉडी इफेक्ट भी कहते हैं और ये बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से भी गेट में पूछा गया है कि बॉडी इफेक्ट की वजह से कौन सा पैरामीटर मॉसफेट के लिए चेंज होता है, तो वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का चेंज आता है मॉसफेट में। ठीक, आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ए। उसके बाद दूसरा चलते हैं, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन BSB। दूसरा ये जरा कह रहा है कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन Na, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो आप देखिए जरा, अगर आप एक्सेप्टर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे 5F बढ़ेगा, अगर 5F बढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। ये भी सही है आपका, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन T ऑक्साइड कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए। T ऑक्स को इंक्रीज करोगे तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू कम होगी तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही, इट मींस दिस इज रॉन्ग। फिर अगले ऑप्शन में कह रहा है कि डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Na, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन Na, जबकि हम लोग देख चुके हैं कि Na बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। तो अब हमारे इस डिस्कशन से हमें यह पता चला कि C और D ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन A और B ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो एग्जाम में हमें A और B दोनों को टिक करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो MSQ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होंगे। आपका क्वेश्चन सही तभी होगा जब इन दोनों ऑप्शंस को आप टिक करोगे। अगर इनमें से किसी एक ही ऑप्शन को आपने टिक किया तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। सो ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया कि इस तरह से पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जो थर्ड वैरायटी। तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला MCQ हो गया, दूसरा MSQ हो गया और तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी मैंने एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लिया है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो दो तीन बार इस तरह का, लेकिन चेंजेस किया उन्होंने कि आप रट नहीं सकते। क्या चेंजेस किए मैं अभी समझाऊंगा आपको, पहले देखें। अ जंक्शन इज मेड बिटवीन P माइनस सिलिकॉन विद डोपिंग डेंसिटी Na1 and P silicon with doping density Na2. Given Boltzmann constant is this, electronic charge is this, assume 100% acceptor ionization at room temperature, यानी जो कुछ भी कैलकुलेशन करना है वो रूम टेम्परेचर पर करना है। The magnitude of the built-in potential, ठीक, built-in potential correct up to 2 decimal places across this junction। अब नॉर्मली आप जब थ्योरी रटते हैं तो आप पीएन जंक्शन का वोल्टेज के लिए फार्मूला याद रखते हैं, या आप बहुत ज्यादा थोड़ा होनहार निकले, रटने वाले अच्छे व्यक्ति निकले, तो आप शॉर्टकी जंक्शन का या मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन का फार्मूला देख लेंगे। उन्होंने जब पहली बार इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया होगा 2018 में, तो उस समय तो लोगों को एकदम नया लगा होगा कि क्या कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं भाई। ये P, हमने तो P और N में जंक्शन देखा है या मेटल और P में जंक्शन देखा है, जबकि ये कह रहे हैं कि P माइनस और P, यानी दो डिफरेंट डोपिंग के सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ही जंक्शन बना दे रहे हैं। तो इनफैक्ट जंक्शन बनता कैसे है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि P और N के बीच में बनेगा या मेटल और P के बीच में बनेगा या N प्लस और N के बीच में बनेगा या N माइनस और N के बीच में बनेगा। किसी भी दो मटेरियल के बीच में जंक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जंक्शन बनाना आपको आना चाहिए, दैट इज द, मैं इन चीजों पर क्यों फोकस कर रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। आपको कोई चीज एक रटनी नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं रटना है, बल्कि उसके पीछे का की कंसेप्ट क्या है,
इस बात पे फोकस करेंगे तभी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर इस क्वेश्चन में हमें जंक्शन का अगर बैंड डायग्राम बनाना आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर हमें बैंड डायग्राम बनाना नहीं आया तो फिर हम रट करके ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फिर वो डोपिंग चेंज कर देगा या टाइप ऑफ द मटेरियल चेंज कर देगा और हमसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, हमें बोला कि एक P माइनस सिलिकॉन है, तो P माइनस सिलिकॉन लेट अस सपोज ये कंडक्शन बैंड S है EC, ठीक है, ये बैलेंस बैंड S है EV, और ये मिड गैप है मैं EI मान लेता हूं। दिस इज फॉर P माइनस सिलिकॉन के लिए, और दूसरा है हमारा P सिलिकॉन, ठीक है, तो ये P सिलिकॉन है, ठीक, और इसका भी सेम सेमीकंडक्टर है, तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल EI एंड EC एंड EV, ठीक है। अब एक चीज देखिए, दोनों की डोपिंग डिफरेंट है। P माइनस की जो डोपिंग है वो 10 टू द पावर 15 है, और P की जो डोपिंग है वो 10 टू द पावर 17 है। तो अगर आपने ठीक से P टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे हम डोपिंग बढ़ाते चले जाएंगे, फर्मी लेवल विल मूव मोर क्लोजर टू द बैलेंस बैंड एज, यानी इस सेमीकंडक्टर की फर्मी लेवल मोर क्लोजर टू द बैलेंस बैंड एज होगी एज कंपेयर टू द दिस सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं फर्मी लेवल ड्रॉ करूं तो सपोज इसके लिए यहां पर आ गया, ठीक है, EF, और इस सेमीकंडक्टर के लिए वो मोर क्लोजर टू द बैलेंस बैंड आ जाएगा समवेयर यहां पर आ गया, ठीक। अब अगर जंक्शन बनाने के बेसिक रूल्स आपको पता होंगे तो आपको यह पता होगा कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। कहां से ट्रांसफर होगा? फ्रॉम हायर फर्मी लेवल मटेरियल टू द लोअर फर्मी लेवल मटेरियल। ऐसे इसको समझ सकते हो कि दो बकेट हैं, ये एक बकेट और ये दूसरी बकेट। तो इस बकेट में वाटर का लेवल यहां तक है और इस बकेट में वाटर का लेवल यहां तक है, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो टॉप पेज है इसको EF की तरह मान लीजिए और इसको EF की तरह। अब इन दोनों में इस बाउंड्री को किसी तरह हम खत्म कर दें। लेट अस सपोज कि इस बाउंड्री को हम इमेजिन करिए कि इस बाउंड्री को खत्म करके इन दोनों को मिला करके एक बकेट बना दें, तो वाटर का ट्रांसफर हायर टू लोअर लेवल होगा। और कब तक होगा? जब तक ये दोनों सेम लेवल पर नहीं आ जा रहे हैं, ठीक। जब ये सेम लेवल पर आ जाएंगे तो सिंगल फर्मी एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर पर, जैसा क्वेश्चन में कहा भी है कि 300 केल्विन पर दोनों मटेरियल की फर्मी लेवल अलाइन होकर के एक हो जाएगी जब इनमें जंक्शन बनाओगे। ये बेसिक रूल है, चाहे वो PN जंक्शन हो या P और P के बीच में हो या N और N के बीच में हो या मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में हो। सो ये फंडामेंटल लॉ है। तो अब होगा क्या कि इस हायर फर्मी एनर्जी लेवल से लोअर फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इस फ्लो की वजह से फर्मी लेवल्स अलाइन हो जाएंगे। अब अगर जब फर्मी लेवल्स अलाइन होंगे तो किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो सेमीकंडक्टर है यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। तो नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन में चेंज को हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फार फ्रॉम द जंक्शन नथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। फार फ्रॉम द जंक्शन जो रीजन होता है उसे बल्क सेमीकंडक्टर रीजन या न्यूट्रल रीजन कहते हैं। तो अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसमें हमारे पास होता है n = NC e⁻ EC-EF अपॉन KT। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस गैप की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो रही है तो इस गैप की वैल्यू कम हो रही होगी। तो सबसे पहले आप फर्मी लेवल को कांस्टेंट कर दीजिए। हमने फर्मी लेवल को दोनों मटेरियल्स में कांस्टेंट कर दिया, ये हो गया हमारा EF, ठीक। अब जरा एक चीज देखिए, अब कंडक्शन बैंड एज को ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। ये रही हमारी कंडक्शन बैंड की एज, बल्क में ऐसी ही रहेगी, लेकिन नियर टू द जंक्शन EC और EF के बीच का गैप बढ़ना चाहिए, दूर भागना चाहिए इसे, टू एकोमोडेट दिस चेंज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक। अब ये इधर से अगर हम लोग देखें इस तरफ, तो इस तरफ ये थोड़ा हमने जंक्शन रीजन को ज्यादा ही दूर तक बना दिया है, इसको क्लोज कर लेते हैं, अदरवाइज सम फिगर लेट अस सपोज हमारा
ये रीजन ही जंक्शन रीजन तक है, ठीक है। इतना ही रीजन में चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक। अब अगर हम इधर से देखें तो इस तरफ से क्या होगा, ये EC बल्क में तो ऐसे ही रहेगा, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही तो EC और EF के बीच का गैप कम होना चाहिए, तो गैप कम करने के लिए ये इस तरफ आने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से आपके बैंड की बेंडिंग होगी, ठीक। बल्क में कांस्टेंट है एंड यहां पर टुवर्ड्स इस तरफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ रहा तो कंडक्शन बैंड एज इज मूविंग टुवर्ड्स द फर्मी एनर्जी लेवल, और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द फर्मी एनर्जी लेवल। अब जो बैलेंस बैंड की एज होगी वो एनर्जी गैप को कांस्टेंट रखने के लिए उसी के हिसाब से मूव करती चली जाएगी ताकि एनर्जी गैप आपका कांस्टेंट बना रहे, ठीक। मैं अप्रोक्सीमेशन में डायग्राम को ड्रॉ किया हूं, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मिडवे रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग मूव करता रहेगा। तो जो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल होता है वो बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होगा, ये जो वैल्यू डेवलप हुई दिस Q इंटू VVI। अब इस Q इंटू VVI को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू आपकी Q इंटू VVI है, सेम स्लोप होगी, उसी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है Q इंटू VVI की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप ये वैल्यू निकाल लो, लेट अस सपोज Q phi 2 मान लेता हूं, और ये वैल्यू निकाल लो, लेट अस सपोज इसे मैं Q phi 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो इस डायग्राम से देखो Q phi 2 में से Q phi 1 अगर घटा दो तो Q VVI की वैल्यू मिल जाएगी। सो हियर यू कैन राइट इट लाइक दिस, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि Q VVI is equal to Q phi 2 माइनस Q phi 1, Q कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज VVI इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। अब यहां से हम सभी जानते हैं कि phi 2 की जो वैल्यू होती है दिस इज KT by Q ln, और P में डोपिंग को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, Na2, ठीक। तो Na2 ln Na2 अपॉन Ni, ठीक, एंड phi 1 की जो वैल्यू होगी दिस इज K2 by Q ln Na1 अपॉन Ni, ठीक। ये बल्क सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है, शुरू में यही पढ़ाया जाता है, तभी हम जंक्शन पर पहुंचेंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो जो VBI की वैल्यू आ जाएगी वो KT by Q यहां पुट करके और सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज Na2 अपॉन Na1, ठीक। अब ये वैल्यू पुट करिए तो ये KT by Q की वैल्यू लगभग 0.026 VT थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर। मैं इसको एक स्टेप सॉल्व कर ही देता हूं यहां पर, ठीक। और ये VVI, सो VVI इज इक्वल टू 0.026 रूम टेम्परेचर पर KT by Q की वैल्यू होती है, एंड ln जो होगा ये 10 to the power 17 और 10 to the power 15 का रेशियो दैट इज 100। ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इसकी वैल्यू सॉल्व करके जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वो आप यहां पर पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जाते हैं। अब इसी तरह आपसे n प्लस और n में बना सकता है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इस काम को करिएगा, बहुत मजा आएगा। सो व्हाट इज द की पॉइंट कि यू नीड टू नो द बेसिक कंसेप्ट कि किस तरह से जंक्शन बन रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक की कोर चीजों को पकड़िए, तब जा करके आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब वंस आपको पता चल गया कि भाई जंक्शन ऐसे बनता है, बैंड बेंडिंग डायग्राम ऐसे बनता है, तो आप इससे जुड़ी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिप्लीशन रीजन हो गया, अब यहां आपको चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगी, चार्ज डेंसिटी पता चल गई, आप पॉइजन इक्वेशन लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, डिप्लीशन रीजन बिट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कुछ भी आपसे पूछा जाए यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। सो कंसेप्चुअली इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसकी मैथमेटिक्स पर बहुत ध्यान रखिएगा कि किस तरह से मैथमेटिक्स है, डिवाइस को बनाने की मैथमेटिक्स क्या है, किस तरह का फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज करके हम डिवाइस को डेवलप कर रहे हैं, कैसे करंट फ्लो कर रही है, कैसे चार्ज का फ्लो हो रहा है, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखेंगे तो सब्जेक्ट बहुत सिंपल लगेगी, बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग भी लगेगी। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब ये होता है कि जैसे 10 मार्क्स की सब्जेक्ट का वेटेज है, सपोज 9 पॉइंट समथिंग हमने बताया, तो लेट अस सपोज 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग जो 3-4 मार्क्स होंगे उसके लिए तो पूरी सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है। लगभग 75 आवर्स की सब्जेक्ट पढ़ी जाती है, तो 65 to 75 आवर्स, जैसे कुछ सिलेबस कम हो गया तो 65 आवर्स मान लेते हैं। तो 65 आवर्स में ये जो टॉपिक्स हैं ये हाईलाइटेड टॉपिक हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से ये टॉपिक हैं देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। खास तौर पर एक सेमीकंडक्टर दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में किसी एक चार्ज कैरियर को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने में कितना समय लग रहा है। वो आप तभी बता सकते हो जब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का आइडिया हो। पोजीशन ऑफ फॉर्मी लेवल इन वेरियस सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप में, पी टाइप में आपसे पोजीशन ऑफ द फॉर्मी लेवल को कैलकुलेट करा सकता है। देन कैलकुलेशन ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन, स्पेशली चार्ज कंपनसेशन का प्रिंसिपल यूज करके या मास एक्शन लॉ का यूज करके किस तरह से आप मेजॉरिटी या माइनॉरिटी कैरियर्स कैलकुलेट करेंगे। देन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट कैलकुलेशन पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टोटल करंट डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम पर टोटल करंट डेंसिटी 0 होती है, तो इस कंसेप्ट को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के कैलकुलेशन पर खूब क्वेश्चन आपके यहां बनते हैं। देन आइंस्टीन रिलेशन, बहुत फ्रिक्वेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कैलकुलेशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग जब करते हैं तो बिल्ट इन फील्ड जो डेवलप होती है उस बिल्ट इन फील्ड का कैलकुलेशन पर क्वेश्चंस, एंड बैंड डायग्राम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये पहला जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस पूरी सब्जेक्ट का, जिसको पढ़ाने में लगभग 30 आवर्स का समय इन्वेस्ट होता है, उस टॉपिक में ये सबसे हाईलाइटेड एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका जंक्शंस। जंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि हाउ टू ड्रॉ द बैंड बेंडिंग डायग्राम अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर रिवर्स बायस, अंडर फॉरवर्ड बायस। अगर आपको बैंड डायग्राम ड्रॉ करना आया तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर उस बैंड डायग्राम की मदद से, जैसे हमने अभी बिल्ट इन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, उसी तरह से आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन रीजन विड्थ, बिल्ट इन पोटेंशियल, ये 3 पैरामीटर खूब फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट कराए जाते हैं, और वो भी दोनों तरह के जंक्शंस के लिए, पीएन जंक्शंस के लिए एंड आइसोटाइप जंक्शंस के लिए। आइसोटाइप जैसे P माइनस और P सेम टाइप ऑफ मटेरियल के बीच में, या N प्लस और N इस टाइप, जहां पर दोनों मटेरियल सेम है, सिर्फ डोपिंग लेवल का डिफरेंस है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। देन आता है डिप्लीशन कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन, और वैरेक्टर डायोड में एक्चुअली लीनियरली ग्रेडेड डायोड होता है ये, तो वैरेक्टर डायोड में वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस का वेरिएशन, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में कैसे होता है, P रीजन में और N रीजन में। करंट वोल्टेज के रिलेशनशिप पीएन जंक्शन के लिए जेनर और एब्लांची ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ये जंक्शन डायोड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जंक्शंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप देखोगे पिछले 3-4 साल में इससे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खासतौर पर सोलर सेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑप्टिकल पावर बाय सेमीकंडक्टर, कि अगर ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इस पर सनलाइट पड़ी तो इस सनलाइट के एब्जॉर्प्शन का पैटर्न क्या होगा। तो इनफैक्ट आप देखें तो ये मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, तो ये वेरी करती है एक्स एक्सिस P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एक्स। इस सिंपल रिलेशन पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी बैंड गैप, ये एक बड़ा होली रिलेशन है कि लैम्डा अगर माइक्रोमीटर में है तो इट इज 1.24 अपॉन EG इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वांटम फिजिक्स से ये रिलेशन निकल करके आता है और बहुत ही पॉपुलर रिलेशन है। एक्चुअली ये हमें मदद करता है कि सपोज हमें रेड कलर की LED चाहिए, तो रेड कलर की करेस्पॉन्डिंग किस वेवलेंथ का मटेरियल चाहिए, अब रेड कलर की करेस्पॉन्डिंग किस बैंड गैप का मटेरियल चाहिए, ये बात पता लगाने में
में इस रिलेशन का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। तो ये खूब पूछा जाता है, ये क्वांटम फिजिक्स से निकल करके आता है। हम लोग शुरू में डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या क्या क्वांटम फिजिक्स का रोल है और कैसे ये रिलेशन डेवलप होकर के आ रहा है, तो इस पर भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सोलर सेल में 3 क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे। एक फिल फैक्टर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एक आपका इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, और एक आपका बीओसी और आईएससी इनके कैलकुलेशन पर। बस इन्हीं 3 बातों पर फोकस रहते हैं। तो सोलर सेल में भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं। फोटोडायोड से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि बहुत 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन पर ही ज्यादा फोकस रखा है, फोटोडायोड में बहुत इन डेप्थ तक नहीं जाते हैं। एलईडी में भी सरफेस पर ही रहे हैं। एलईडी में ज्यादातर की आपको वेवलेंथ कैलकुलेशंस का या वेवलेंथ के हिसाब से कटिंग वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा। अब अगर आपको बैंड डायग्राम ड्रा करना आता होगा तभी आप बता पाओगे कि कटिंग वोल्टेज और एनर्जी बैंड गैप में क्या रिलेशन है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेड एलईडी के लिए या ग्रीन एलईडी के लिए या ब्लू एलईडी के लिए इन तीनों में कटिंग वोल्टेज का क्या रिलेशन है। तो इनकी वेवलेंथ का और बैंड गैप का रिलेशन ये है। अब कटिंग वोल्टेज का रिलेशन अगर बैंड बेंडिंग डायग्राम पता है तभी बता सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल समझते हो वो क्वेश्चन भी बेसिकली मैथमेटिक्स से ही जुड़े हुए हैं। फिजिक्स बेसिकली क्वांटम फिजिक्स का बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन ये सब्जेक्ट करती है, और जिसको क्वांटम फिजिक्स में मजा आएगा उसको इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देन बीजेटी ईडीसी में कम पूछी जाती है। बीजेटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट ईडीसी में है। जो मेन बीजेटी का सिलेबस है वो एम्पलीफायर्स हैं बेसिकली, और वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बीजेटी से यहां पर भी पूछे जाते हैं, जैसे इंजेक्शन इफिशियंसी, ट्रांसपोर्ट फैक्टर और करंट गेन की इंटर रिलेशनशिप पर क्वेश्चन बनता है, या इनका डोपिंग के साथ किस तरह से वेरिएशन होता है इनकी वैल्यूज में, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फॉर वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कि जो इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर है ये एक्टिव रीजन में, वेरियस रीजन्स में, इमीटर बेस या कलेक्टर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, आपका सैचुरेशन मोड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वेरियस मोड्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स। देन कैलकुलेशन ऑफ कलेक्टर करंट फ्रॉम द माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस रीजन। बेस रीजन में आपको माइनॉरिटी कैरियर की प्रोफाइल दी होगी और उसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना होगा कलेक्टर करंट की वैल्यू। देन कलेक्टर करंट और बेस टू इमीटर वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप और ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेशन पर भी खूब क्वेश्चन पूछे गए। एंड देन अर्ली इफेक्ट। इनफैक्ट बीजेटी में तो इन टॉपिक्स के अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाता है, ईडीसी में इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। एक आध क्वेश्चन वन से वाइल डिफरेंट हो सकता है बस। देन आता है एफईटी। एफईटी में वैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मॉस कैपेसिटर और एनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मॉस कैपेसिटर और एनहांसमेंट टाइप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। यू कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल थिंग कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वेरिएशन कैसे हो रहा, मॉसफेट में करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशनशिप कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ट्रांस कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसी रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स की वैल्यू क्या होगी, लीनियर रीजन में करंट इक्वेशन क्या है, सैचुरेशन रीजन में करंट इक्वेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो। सो कई बार आपसे करंट और ट्रांस कंडक्टेंस के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करवाया जा सकता है। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इन फैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज। उसका एक रीजन है कि अभी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हम लोग जो फैब्रिकेशन कर रहे हैं वो एफईटी बेस्ड डिवाइसेस का ही कर रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 1/5 टाइम्स आप एरिया रिक्वायर करती हैं एज कंपेयर टू द बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो चिप पर एरिया एक्वायर करते हैं वो बहुत कम होता है। तो इंटीग्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए एग्जाम में भी इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। सो ये तो रहा हाईलाइटेड टॉपिक। और इस सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हुए, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, बस सिर्फ डिलीशन हुआ है। आईसी फैब्रिकेशन को गेट के सिलेबस से हटा दिया है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हैं, एमएसक्यू में किस तरह से पूछ सकते हैं उसका मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ह्यूज वेटेज है और बहुत मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से बहुत प्यार होना चाहिए, तभी ये सब्जेक्ट समझ में आएगी और तभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग समझ में आएगी। तो बड़े प्यार से इस सब्जेक्ट को पढ़िए, और अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत लगती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सो थैंक यू
thanks a lot, and this was the information which I wanted to share you regarding this subject in this GATE conclave. और देखते रहिए मेडीजी गेट कॉन्क्लेव 2021 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे. थैंक्स अ लॉट. Welcome children, welcome to MADEEASY Prime, the most prestigious organization of India, where the esteemed faculty members, what an experienced children the faculty are having, and the horizontal expansion of the subject and also the vertical expansion of the subject, what a clarity that you are going to get. And the students' point of view, they are the number one organization as far as the trust and ranks are concerned. Okay, now the MADEEASY Prime is going to launch GATE 2021 Conclave in the electronics engineering, and where we are going to have the knowledge in such a way that the conceptual explanation and the vertical expansion both you are going to get, like the horizontal expansion and also the vertical expansion. The number one organization children, you don't miss this particular opportunity. And here if you focus on the syllabus of GATE 2021 for the electronic devices, here that electronic devices are concerned, we are having the energy bands in an intrinsic and extrinsic semiconductors, equilibrium carrier concentration, direct and indirect band gap semiconductors, and the carrier transport, diffusion current, drift current, mobility and resistivity, generation and recombination of carriers, the Poisson and continuity equations, PN junction, the Gina diode, BJT, mass capacitor, MOSFET, LED, photodiode and solar cells. This is the thing that we are having in the syllabus. Okay, and here I am the Ramesh, having more than 23 years of experience in teaching, is also the now actually we are having the discussion of this particular subject related to the electronic devices and circuits. I am going to give the idea to you here in this one. The added topics are not at all there, but the removed topic will be there. That is nothing but the IC fabrication process, where the basics of the integrated circuits and fabrication process is not at all there this year. Previously it is there, but this year it is a removed topic of electronic devices and circuits, my dear children. And here in this, if you see the last 5 years, the weightage here we are having, that is of 10 marks weightage. And the question pattern that you can see here, questions asked are here 1 mark questions in the recent exam, 2 1 mark questions, and 2 here we are having the questions, 2 mark questions are we are having the 5, and 1 mark questions we are having the 2. Like that in 2019, if you observe here the 3 and here the 4. So on an average you are getting the 10 marks overall in the case of this particular devices and circuits. Okay, right. And as far as this questions pattern is concerned, you can see the question pattern here. The multiple choice questions we are having carrying 1 or 2 marks each. These are objective in nature. For a wrong answer in the MCQ, there will be 1/3 negative marking will be there. Okay, as usually you know the multiple choice questions here. For example, you can see a question here like this: at a room temperature, the current in an intrinsic semiconductor is due to, options are given. So like this you can have the multiple choice questions. So given multiple choice, in that you have to select one of them, like that the thing we are having. Okay, as usually used to answer, no. And as far as this MADEEASY examination pattern is also concerned, we are having the same way, even more standard also the questions the students used to experience while in the coaching time, isn't it? Right, that is the way we are MADEEASY is going to have in the conclave of this 2021. Don't miss this opportunity here. And here we are having next one is nothing but multiple select questions. Multiple select questions in the sense, in a multiple choice, actually A, B, C, D, something like that. If you are having only one of them is the option generally in the MCQs, but here it is nothing but MSQ. That means multiple selecting of the answers. That means we can have more than one answer also will be there in that. So we have to check those multiple selection in that. That means maybe A, B can be answered, or B, C can be answered, something like that. More than 2 will be the answer there. So you have to be careful while answering these. And as far as the example question is concerned, you can say like this. This is the way we are having the question also, like multiple
way answers here, okay, like A and B, A and C, something like that, you can check it, right. Now it is also having the numerical type of questions here. These questions will carry 1 or 2 marks in most of the papers, and here the numerical data type questions that you can expect even in the electronic devices and circuits, okay, right. Now here the important topics, this is a very important thing to discuss here, where in the electronic devices and circuits the important topics are going to be the semiconductor physics, where it is having a more depth of the subject, like the ocean of fundamentals will be there, and we are having actually in this one the more horizontal expansion of the subject, like the drift, the process of the drift, where electron movement under the influence of electric field, and the diffusion, where it is going to be like the carrier concentration gradient is going to cause the diffusion process, and the Fermi level, and the effect of electric field on the energy levels. My dear children, in these days we are getting a very good question here, like effect of electric field on energy levels, like that we are having. Related to that also we can expect the questions. Recently we are getting more from this topic also questions, okay. And next one is PN junction. In the PN junction we can focus like the width of the depletion layer related to the capacitance and the relation between those, and in comparison of this widths and capacitances also you can expect the questions there. And next one is solar cell, one of the very important and interesting topic where you are getting the questions in these days. And here next one is LED efficiency related, also you are getting the questions there, like the efficiency, that means how much the photons are incidenting and how much electron hole pair are generating. Based on that efficiency point of view also you can get the questions. And most important, one more thing is the mass capacitor. Seems to be a simple sentence, a simple word like the mass capacitor, but from this you are going to get a very good questions here, and the conceptual depth also in the MADEEASY you are going to get in a fantastic manner. Not only this subject, every subject you are going to get with more experienced faculty. Based on that you are going to get the very good training here, okay, right. Now if you observe the things like in the MADEEASY, other things if you observe like the students trust point of view, all the engineering students destination will be towards the MADEEASY only, don't forget that, because the way of learning there is going to be fantastic. The examination pattern and experienced faculty members, such type of so many things are going to be, the environment is especially, and the response from the management is especially fantastic. The chairman sir, the Singh sir is going to give with the students the interaction always, so that their problems also going to be directly will be observed by the chairman sir, like that the things are going to be fantastic, so that you please don't miss the opportunity of this MADEEASY Prime 2021 GATE Conclave, okay. So this is Ramesh, who is dealing the subject of electronic devices and circuits, having more than 23 years of experience, and here the organization which is actually the most trustable organization in India, the #1 organization in all the point of view, and don't miss this opportunity, okay, right. Thank you. Hello dear students, I welcome you all to MADEEASY Prime Studio for GATE 2021 Conclave in Electronics Engineering. I am IftequarAhmed. I have done my MTech in Digital Systems and then worked as a faculty at a reputed college in Hyderabad, and then I have been with MADEEASY for the past 10 years. I have been teaching here analog circuits and electronic devices. And in this discussion we will talk about what are the changes in syllabus for analog circuits in GATE 2021. Okay, as everyone is aware, the GATE syllabus is revised. There are some minor changes in the syllabus, and there is slight change in pattern of the questions also. So these things we will go through in this discussion. Okay, we will first have a glance at syllabus for analog circuits in GATE 2021. This syllabus has been made simpler, concise, and I can say crisp. Okay, all redundant topics have been removed from the syllabus. And if you have a glance at the syllabus, it begins with diode circuits. In diode circuits, we have clippers, clampers, and rectifiers. Now, along with this, we should also learn Zener diode as a regulator. That topic is not mentioned, but treat it as a part of the syllabus. Zener diode as a regulator. The word Zener diode is mentioned in electronic devices syllabus.
So you need to learn application of the Zener diode. That application is a regulator. Okay, so don't forget Zener diode regulator. And then apart from that, we should also learn equivalent circuits for diodes, small signal equivalent and large signal equivalent circuit for a diode. And then you should practice some questions which are based on calculation of current and voltage in a diode circuit. So all these things come under diode circuits, and if possible also go through rectifier with capacitor. We normally, when we say rectifier, we mean rectifier having resistor as a load, but we may also use capacitor in parallel to that load. That capacitor will actually behave like a filter. So include that rectifier with capacitor also in your preparation. The word rectifier with capacitor not mentioned here, but treat it as a topic which is inclusive in that rectifier topic. Okay. Then the next section in analog syllabus is BJT and MOSFET amplifiers and biasing. Okay, we need to first go through biasing circuits for BJT and MOSFET, and then small signal analysis of BJT and MOSFET amplifiers. And when the word amplifier is written here, that includes single stage and multi-stage amplifiers. You have to go through single stage amplifiers. In addition to that, you should also learn some special multi-stage amplifiers like Darlington amplifier, Cascode amplifier. Okay, those terms are not mentioned in the syllabus, but treat multi-stage topic as a subset of this amplifier topic. Okay, and that AC coupling is nothing but RC coupling. We need to learn RC coupled amplifiers, RC coupled BJT amplifier, RC coupled MOSFET amplifier. And frequency response, that frequency response shows variation of voltage gain with respect to frequency. And when we analyze these amplifiers, that analysis should be for medium frequencies, low frequencies as well as high frequencies. You should learn small signal analysis for BJT and MOSFET amplifiers at medium, low and also high frequencies. Okay, and then current mirrors. Now these current mirrors are used in IC amplifiers. Whenever I make a BJT amplifier or a MOSFET amplifier on an IC, then in that IC, that FET, MOSFET or BJT, it will be biased with the help of current mirror. And there are various current mirrors like basic current mirror, a 3 transistor current mirror, Wilson current mirror, and we also have a Widlar current source. You need to learn all these circuits. Okay, and then differential amplifiers. Now these differential amplifiers, they will be having 2 input signals and they will amplify difference of those input signals. These differential amplifiers we can form using BJT and also MOSFET. You need to learn BJT differential amplifier and also MOSFET differential amplifier. These differential amplifiers will be used in internal circuit of op-amp IC. Okay, that op-amp IC 741, its internal circuit will be having differential amplifiers. And when you learn these differential amplifiers, you should learn DC analysis as well as small signal analysis of differential amplifiers. Okay, and then the next section in analog syllabus is op-amp circuits. Here you need to learn first some basics of op-amp like characteristics of ideal op-amp, practical op-amp, frequency response of operational amplifier, transfer characteristics of operational amplifier. Okay, and some terminologies that we use in op-amp like bias current, offset current, input offset voltage, common mode rejection ratio. All these are terms that we come across in op-amps. Learn these basic terms. Okay, and then applications of op-amp. All these amplifiers, summers, differentiators, integrators, they all are applications of op-amps with negative feedback. We can divide op-amp circuits into 2 types: negative feedback op-amp circuits and positive feedback op-amp circuits. These applications, amplifiers, summers, differentiators, integrators and active filters, they come under negative feedback applications. And there is one more clarification here. In the revised syllabus, the word feedback amplifier is not mentioned. But remember, without knowing feedback amplifiers, you may not be able to learn op-amp circuits having negative feedback. So my suggestion is feedback amplifier must also be learned, though they are not mentioned in the syllabus, but you need to learn some basics of feedback amplifiers. Okay, like what happens to gain and bandwidth when I use negative feedback. Okay, what are the types of negative feedback, voltage series, voltage shunt, current series, current shunt. These fundamentals you must learn. Okay, the word feedback amplifier, though it is not mentioned in the syllabus, but you must go through it, because if you learn feedback amplifiers basics, then you will be able to appreciate
this op-amp circuits having negative feedback. Then we have Schmidt triggers. Now these Schmidt triggers are nothing but op-amp circuits having positive feedback. You need to learn basic Schmidt trigger, and then in that Schmidt trigger, if I connect RC network, it will become astable multivibrator. You have to go through astable multivibrator also. And in that astable multivibrator, when we connect some more additional elements, it will become monostable multivibrator. So all these are like circuits that we form on the principle of Schmidt trigger. So if the word Schmidt triggers is mentioned, it includes all positive feedback applications of op-amp, like basic Schmidt trigger, astable multivibrator, monostable multivibrator, and also triangular waveform generator. All these circuits, they operate on the principle of Schmidt trigger. So learn all these 4 applications. And finally, oscillators. Now these oscillators, they can be sinusoidal oscillators and non-sinusoidal oscillators. Sinusoidal oscillators are Wien-Bridge oscillator, RC phase shift oscillator, and inductor capacitor oscillator, LC oscillator. Then there are non-sinusoidal oscillators, which I mentioned already, that astable multivibrator is a square wave generator, monostable multivibrator is a pulse generator, okay, and triangular waveform generator. These circuits come under non-sinusoidal oscillators. And if possible, go through square wave generator using IC 555 also. That word IC 555 is not mentioned in the syllabus, but learn some basics of IC 555, okay. So this was about the new syllabus of GATE 2021. Then let me also tell you what are the changes that have appeared in the syllabus. As I said, syllabus has been made crisp and concise. There were so many redundant terms in the syllabus earlier, like power amplifiers. Though they were there in the syllabus, but question has never come in the last 20 years in the GATE paper based on power amplifier. This time the topic is removed. So you can leave this power amplifier topic, it is excluded. And IC 555, about this I have a a reservation. Though it is not mentioned in the syllabus, but I suggest you to go through astable multivibrator using timer and also monostable multivibrator using timer. These 2 applications, include them in your preparation, okay. Though it is not mentioned timer IC 555, but I suggest you that go through it. It is always better. Then this voltage reference circuits. This was mentioned in the 2016 GATE syllabus, but question has never come based on voltage reference circuit, and this time the topic is removed from the syllabus. Then wave shaping circuits and function generators, these topics are also excluded from the syllabus. They are actually a subset of oscillator. Those wave shaping circuits and function generators, they come under oscillators only. So to make syllabus concise, this elaborated topics, they have been removed, okay. GATE syllabus has been made crisp and concise. So in that way, these topics have been excluded from the syllabus, but they are like a part of oscillators, okay. And the added topic is current mirror, but it was already there in the syllabus earlier, though it was not mentioned in written, but questions have come in previous GATE papers based on current mirrors. This time the word current mirror is mentioned exclusively in the syllabus, okay. And if you look at the syllabus of analog circuits, you will clearly see that there is a greater emphasis on amplifiers, okay. It's all about amplifiers here, and here also it is all about amplifiers. So I feel here that the new syllabus has more emphasis on amplifiers, BJT amplifiers, MOSFET amplifiers, differential amplifiers, okay, and then operational amplifiers. And moving ahead, the weightage of analog circuits, as you all must be having this idea, analog circuit is one of the most important subjects for electronics stream, and here is a table showing how many questions have come in the last 5 years from analog circuits. And this subject has a weightage, average weightage of about 11 marks. So you can say every year the weightage for analog circuits will be roughly from 10 to 12 marks, okay, 10 to 12 marks. So treat this as one of the most important subjects for GATE, okay. Then we will discuss the pattern of the questions. In GATE 2021, there will be 3 types of questions: multiple choice questions, multiple selection questions, and numerical answer type questions. For MCQs, they can be for 1 mark or 2 mark, and
there will be 4 options given, and one of those 4 options will be correct. You need to pick up that correct option. If your answer is correct, you will be given the allocated marks, but if the answer is wrong, there will be a negative marking of 1 by 3. 1/3 of the allocated marks will be deducted for a wrong answer. And I will take one sample problem just to tell you what is an MCQ. I have taken here a question on bridge rectifier. It has a 9 volt AC input voltage and diodes are ideal. What is DC output? We need to find out DC output voltage for this bridge rectifier. Now this 9 volt AC input which is mentioned, it should be considered as RMS voltage. Whenever some AC voltage is mentioned in the question, by default it is considered to be an RMS value. So I will take 9 volt as an RMS voltage, and that RMS voltage is Vm by root 2. So Vm by root 2 should be equated to 9, and from here you calculate Vm. It will be 9 into root 2, it will be 12.72 approximately. And then in this bridge rectifier, if diodes are ideal, then DC output voltage will be 2 Vm by pi. Okay, from bridge rectifier analysis, we should be knowing this VDC equal to 2 Vm by pi, and substitute that Vm 12.72 and calculate it, it will be 8.1 volt approximately. So in this way you can say that option D is correct. So these are called MCQs, multiple choice questions, where one of the given 4 options will be correct. Then the second type of question that will come in GATE 2021 is multiple selection question. Here more than one option will be correct, okay, and you need to pick up all correct options. Let us say 2 options are correct out of the 4, then you should select all the 2 correct options, only then you will be given the allocated marks. But if you pick up only one correct option and the other you are not able to pick up, then there will be no marks given for that. There is no partial marking here, and if your answer is wrong, then there is no negative marking also, okay. So only if you pick up all the correct options you will be given marks allocated, and otherwise there is no partial marking and there is no negative marking here. And I will take one sample question based on this MSQ also, multiple selection question. This question is about why we use biasing in BJT amplifiers. Now we use biasing in BJT amplifiers to stabilize the operating point against temperature variations. This is a correct option. Through proper biasing we can keep collector current stable, and thereby we can keep operating point also stable. And to place operating point in linear region of the characteristics, no, that is also correct. The basic purpose of biasing is to operate BJT in active region. That active region is called linear region. So second option is also correct here. And the third option, it will be incorrect, because you cannot make alpha, beta and ICO independent of temperature. That alpha is common base current gain, beta is common emitter current gain, and ICO is reverse saturation current of collector junction. Now these values will vary with temperature. You cannot make them independent of temperature, okay. So these parameters will vary with temperature, you cannot make them independent of temperature. But what we can do is, we can make collector current independent of temperature through biasing, but we cannot make alpha, beta and ICO independent of temperature through biasing. So third option will be incorrect. And fourth option is also correct, to reduce distortion. If you keep operating point at center of the load line, then output signal will be having least distortion. So in this way, for this question I will say 3 options are correct. Option A, B and D, these 3 options are correct. You need to pick up all these correct options, only then you will be given the marks allocated. But let us say I have selected only option A and B, then there will be no marks given for it. You have to pick all correct options, only then the marks will be given. And in case you pick up a wrong option, then there will be no negative marking, okay. You will get marks only and only if you pick all correct options, that's it. Then the third type of question that will come in GATE is numerical answer type question. Now these questions, they were included right from 2016 onwards, okay. From 2016 almost every year a question is coming based on this numerical
answer type category. It's like fill in the blank kind of question, and this will be mostly numericals, I mean calculation based questions. There will be no theory question here most likely. Theoretical questions may come in MCQs and MSQs, but numerical answer type questions, they will be mostly calculation based. You need to fill up the blank with the correct answer, and that answer should be according to the units mentioned in the question. For example, if you are calculating frequency, then that frequency unit will be told in the question, that calculate frequency in kilohertz, then you give your answer in kilohertz only. Or question may say calculate frequency in megahertz, then give answer in megahertz. So you should fill up the blank according to a hint given in the question. And there is no negative marking here. If you fill up the blank with correct answer, you will be given marks allocated, but if your answer is wrong, then there is no negative marking. I will take one question which is about this numerical answer type question. Some MOSFET amplifier is given and you have to calculate input pole frequency. Now this input pole frequency will be nothing but the cutoff frequency due to input capacitance. The circuit given is a common source amplifier, okay, and what we will do first is this capacitor, it is between output node and input node. So we will replace this capacitor with Cm and Cn by using Miller's theorem. Whenever there is a capacitor between input node output node, then that capacitor we replace with two capacitances in this way. This I call as Cm and this I will call as Cn. We need to apply here Miller's theorem to that capacitor of 50 picofarad, and before that we will find internal voltage gain. It is a common source amplifier, so its internal voltage gain will be minus Gm into load resistance. That load resistance is this 1 kilo ohm, and that Gm is given 10 milli. Substitute here, you will get a gain equal to minus 10 into 1, it will become minus 10. Then we calculate this Cm. That Cm formula is from Miller's theorem. It will be C into 1 minus AV. You can substitute C equal to 50 picofarad and voltage gain equal to minus 10. It will become 50 into 11, 550 picofarad. 550 picofarad. Then our aim is to find input pole frequency here. That input pole frequency is nothing but cutoff frequency due to input capacitance. And that cutoff frequency, I am calling it F in. It will be in this form, 1 by 2 pi R into input capacitance. That input capacitance is Cm. And that R we need to find. That R will be resistance seen by the capacitor Cm under the condition that input source is disabled. That R will be resistance seen by this capacitance under the condition that input source disabled. So what we do is we disable this input source. If I disable this input source, then Cm will see this 5 kilo ohm. Okay. If you draw here input circuit for this amplifier, this gate terminal, and here is source terminal, that source is grounded. Now between gate and ground you have Cm present. Then there is a 5k resistor here. And when we want to find resistance seen by this capacitor, in that calculation we have to disable this input source. So let us disable this source. Then this capacitor will see this 5k resistance. That R you can put as 5k. Just put here all the values, 1 by 2 pi into 5 into 10 power 3 into capacitance 550 picofarad. 550 into 10 to the power minus 12. Just calculate this value, it comes out to some 57.87 kilohertz. So in this problem, the input pole frequency is 57.87 kilohertz. So this option you need to, this blank you need to fill up with 57.87. That's it. That answer is asked in kilohertz. So calculate answer in kilohertz, 57.87 kilohertz. This is third category of question that will come in gate, numerical answer type. Then we will talk about what are the important topics in analog syllabus. These are the important areas from where questions have been coming
in the gate papers regularly. Okay, questions based on BJT and MOSFET biasing circuits, then small signal analysis of BJT and MOSFET amplifiers. Here you should learn mainly voltage gain calculation, input impedance, output impedance for a given amplifier, and then low and high frequency analysis. There we calculate lower cutoff frequency, higher cutoff frequency. Those calculations you should learn. Then op-amp circuits. These are op-amp circuits having negative feedback and also positive feedback. In op-amp circuits where negative feedback is present, we do the analysis by using virtual short circuit concept. Okay, so you should practice all those negative feedback applications and positive feedback applications of op-amp. And then analysis of circuits having two MOSFETs in series. Such questions have been coming almost every year in the last 10 years of gate papers. There will be two MOSFETs connected in series. Okay, you need to first find their operating region, whether they are in triode region or saturation region, that you should decide first. Okay, and then question will be about calculate current in the circuit or calculate voltage in the circuit. So such problems were two MOSFETs in series, an important area with respect to gate. Zener diode regulator. This is also an important topic. Okay, and analysis of single diode and multi diode circuits. Questions on a circuit having single diode or multiple diodes. Okay, the question can be about calculate current in the diode circuit shown, or calculate some voltage in the diode circuit shown, or question can be about which diodes are on, which diodes are off, diode testing type of problems. Okay, and the question can also be about small signal analysis of a diode circuit where we replace diode with a small signal model, or sometimes we replace diode with a large signal model. You need to learn those diode equivalent circuits. Okay, question based on where we replace diode with a equivalent circuit. So these are some important areas from where questions come almost every year in the gate paper. And for your preparation, you can also go through this book, Microelectronic Circuits by Sadra and Smith. Okay, apart from the lectures, classroom lectures, you can also practice workbook, classroom workbook, and then practice previous gate papers of all branches. Analog is a common subject for electronics stream, electrical as well as instrumentation. You can practice gate papers of all branches so that you get a better exposure to problems in analog circuits. Okay, and then if time available, go through objective papers of engineering services also. Okay, there you will be finding questions like which of the following statements are correct, and such questions may be asked in gate as multiple selection questions. So go through objective ES questions also, and if time permits, then go through Microelectronic Circuits by Sadra and Smith. From this book, practice some numericals. Okay, so that's pretty much about a discussion on syllabus for analog circuits in GATE 2021. I wish my sincere best wishes. Okay, I convey my best wishes to all of you, and I hope that you all will come out with flying colors in GATE 2021. Thank you. Hello friends, hope that you are very eager to prepare for the GATE exam, or you are preparing for the GATE exam even. So let us discuss about few important things in the electronics and communication engineering syllabus for GATE 2021. By the way, I am Vijaya Kumar. So I am faculty in MADEEASY education since 8 years, teaching the subjects called as microprocessor, microcontroller for electrical, electronics engineering, and also for mechanical engineering. Fine. So today I would like to discuss the newly introduced subject called as computer organization in the GATE 2021. So for electronics and communication engineering, before to this, microprocessor 8085 IO interfacing concepts and programming concepts were present in the previous syllabus. But as a new syllabus in 2021, computer organization has been introduced, which is more or the less similar to processor, but more orientation towards the design part of a microprocessor. Fine. So before I discuss the actual syllabus of computer organization, let us look at the subject name called as computer organization.
So this subject has got two names included. One is computer, other one is organization. So generally we all know what is a computer. So computer is simply one fast electronic calculating machine which accepts the digitized data or information at the input side, processes this data with the help of some list of instructions stored in the memory, and this processed data is sent to the output or sent as some output information. So this is the basic job of any computer. But this computer also has got some blocks like some input block, output block, similarly CPU or other words processor, and one more important block is called as memory. So this computer organization subject has to be discussed more in the hardware orientation so that you can understand the design of the computer structure. So to understand the word called as organization, so generally let me tell you one simple illustration. For example, say what do you call some organization, normal organization. Organization is something like having organized set of a group of people with a particular purpose. It may be some government organization or a private organization, whatever it is. So an organization works with respect to some purpose. In the same way, computer organization means you are designing a computer based on the attributes which are required according to the current scenario in the real world. So what are the things that have to be followed by an electronic engineer or by a designer, considering all the aspects of current scenario, keeping in the mind that you should follow the cost, performance, efficiency also. Fine. To understand the word called as organization, you should first know what is the meaning of computer architecture. Computer architecture refers to attributes of a system that is visible to a programmer, or in other words, so these are the attributes that have a direct impact on logical execution of a program. In other words, I can say the definition in a similar way. For example, computer architecture is a study of functional operations of individual hardware units in a computer system with respect to some flow of information between them through a proper control among them. Means what are the control signals involved in exchanging the data from memory and all. Whereas computer organization deals with, or it refers to, the operational units which are doing that operations and the interconnections between them that realize the architectural specifications. Let me be in a simpler way. For example, let us say you are an engineer. So you want to design some system. You want to design some new computer with some extra features. Let us say some computers, olden computers, will not have some multiplication instruction directly. Let us say the architectural issues discuss like whether multiply instruction has to be included or not. Let us say you want to design some multiplication instruction. That is architectural issue. But the organization issue is, if you want to design that multiply instruction, will you have a separate multiply unit in the processor, or will you use the same existing addition unit such that adding the same cumulative addition can also be done as multiplication? So these two considerations will come under the organization features or attributes or issues. It means architecture is a plan, but organization is implementation of that plan. So that is what which is discussed in this particular subject called as computer organization. For example, in a civil construction, an architect designs the building shape and all, how the building elevation should be, how the room should be and all. But the final implementation is done by the contractors, the labor and the coordinators who are doing this job. So that is the basic difference between architecture and the organization. So organization plays an important role in the implementation of the things. Fine. For example,
how this subject is useful for an electronics and communication engineer. So, in this subject, for example, say that you are a designer. If you want to design a new computer, what are the different attributes you have to consider with respect to increasing the performance of the computer, efficiency, and at the same time staying within the cost, power, and the other constraints or availability constraints which are required. So, this required task has got several aspects to be considered. What are the aspects? You should know what is the instruction set which has to be designed for such a powerful computer to increase its performance. You should also know what is the logic design for it, what is the functional organization, and also the final implementation. The implementation plays very important role. Like if you take an IC, microprocessor is one IC. So this IC design, issues or design issues, packaging issues, what is the power required, and what is the cooling mechanism for avoiding that heat and all, these all come under the implementation task. It means implementation of a computer involves two important components. What are those? One is hardware, other one is organization. Hardware is simply like detailed design logic of the internal components, flip-flops, adders, so on, etc. What is the packaging and other issues. But organization also has got some high level aspects of computer design. What are those? What is the memory system required for it? And what is the interconnection of that memory system? And what is the CPU design for it, means microprocessor design for it, which has got the arithmetic and logic unit and the execution of data transfer instructions or the branching instructions and other ALU operations. So these all aspects come under the implementation of computer. So this subject called as computer organization, as an electronic engineer, we will be discussing about what kind of design aspects must be considered. So as per the GATE 2021 syllabus, so the syllabus is as follows, like they have given machine instructions and addressing modes. Like to design such type of CPU or a particular microprocessor, what is the instruction set required, machine instructions, and how data must be accessed from the memory, how to move the data with respect to the instructions, that is called as addressing modes. Similarly, we also study about the arithmetic and logic unit, like performing addition, subtraction and division, multiplication operations, and also some logical operations. And similarly, the data path and the control unit which is required. So the data path here is considered like, for example, data processing. So this will involve the arithmetic algorithms and the circuits which are needed for implementing that. For example, say operating the data, like for example, operations can be done on fixed point numbers like integers and also on the floating point numbers. So these all aspects will come under the data path. And the next one is control unit. So control unit is the main thing, like it is a nervous system in a human body. In the same way, to do any task in a computer, the control unit is behaving like a brain of the microprocessor. Or heart of a core component of a computer is microprocessor, or brain of a computer is microprocessor. In that microprocessor, the system which is generating the signals is the control unit. So these are very important aspects to design a perfect system to increase its performance or efficiency. Fine. The next thing is, we'll find the instruction pipelining. What is instruction pipelining? In the olden microprocessors, one instruction should execute at a time. Means after completion of the whole instruction only, we can go for the next instruction. But the process would be very slow, and hence the output throughput will be reduced, means efficiency will be reduced. So as the number of operations to be performed has to be increased, the microprocessor should have the pipelining of instructions. What is pipelining? So this
concept called as instruction pipelining is actually an implementation technique whereby the multiple instructions are overlapped in the execution. So this is used to increase the speed of the operations and thereby designing fast performance CPUs. So this will yield in what you call as a reduction in the average execution time per instruction. So that is the advantage of the instruction pipelining, so that you can increase the speed of operation and time will be reduced per instruction. So these are the different topics which have been included in the GATE 2021 syllabus for the subject called as computer organization. So one of the important subjects in the latest current day applications. So let us see the different types of questions which are generally given in GATE with respect to this electronics. So if you observe here, as this subject is a new subject, since last 5 years you do not have this subject, so it is newly introduced. So the subject before this was microprocessor in the digital circuits or digital electronics part. So as you know very well that when a subject is newly introduced, there are two things. The paper setter has got a very good option to bombard with the questions as the topic is new, or on the other face of the coin, as the subject is newly introduced, he may give some basic questions also. It means, according to my view, there may be some 1 mark or 2 mark questions, and sometimes the questions can be linked up with the digital electronics subject also. Fine. So most probably you may have 1 or 2 marks questions in the initial years, right. The next thing is how the questions are present in the GATE paper. So we know there are 2 types of questions in the olden pattern, like multiple choice questions having 4 options. We have to select one as the correct option, and other one is numerical type of questions. But so let us look at the third category also in this one. For example, multiple choice questions, as you know, it is 1 or 2 mark question, and the other one is it has got 1/3 of negative marking. For example, pattern of questions, if I take one simple illustration of a question here, if the operation or operand, if the operand or data, it is called as data or operand in addressing modes, is given explicitly in the instruction, then what kind of addressing mode it is? So there are few options given here, like direct addressing mode, indirect, immediate, and the other one is none. So what is the meaning of this? Generally, addressing mode indicates the specific format, what are the various formats specifying the operands. Operands means data. So if the data is a part of instruction, that is called as immediate addressing mode. So option will be C. So that is multiple choice question. So there are different addressing modes which indicate how data is accessed for a particular instruction. Fine. The other one is the multiple select questions, which has been newly introduced in GATE 2021. So here we must be little bit cautious. Till now, for several years, we have been habituated to solve the questions having one right option. But now, as the competition is more, you know, they change the keep on changing the patterns. So here, this is not this does not have any negative marking, but at the same time, it does not also have partial marking. In multiple select questions, you have multiple answers for the same question. But you must mark both true answers, then only the whole mark will be given, or else partial marking is not allowed in this category. For example, let us consider one simple example of this multiple select question illustration. Take one question like the 2's complement of an 8-bit data is given. You have to find out what is the value, 2's complement. Some binary data is given, you have to find out the 2's complement. Generally 2's complement means finding 1's complement plus 1. So if you take the data, after finding 1's complement, you have the data, just shuffling the bits 0s to 1s and 1s to 0s, and if you add 1, the data will be 1001, 1101. That is option B.
But if you observe, if you write the same binary pattern in the hexadecimal, it is 9D also. Therefore, here the same question has got two answers. Same means multiple synonyms, something like synonyms. So, data is same, one is written in binary, other one is written in hexadecimal system, number system. So, both B and C are true. Therefore, the options here it is B and C. For example, if you mark only B, then also answer is wrong. If you mark any wrong answer, that is also wrong, and the correct will be possible only if you mark B and C. So, such type of new pattern has been introduced in the GATE 2021. And the other type of question, as we know till now, the last kind of syllabus till this last year pattern, that is numerical answer type of questions. So, here it is something like fill in the blanks, you have to calculate the data. Most probably the questions will be in the calculation type of pattern. For example, let us consider this also have got 1 or 2 marks in the weightage, but here also the questions will have the calculation based type of pattern, but you know that the negative marking is not provided for them. Fine, let us take one simple example of this particular numerical type of question. Say the operating frequency of a processor is given as some 5 megahertz, and if a program requires some 200 clocks for execution, then what is the total execution time? Very simple, total execution time is given as 1 by operating frequency, or in other words clock frequency, and multiplied by number of clocks and the count value. The count value is indicating how many times an instruction or set of instructions executed. So, 1 by 5 megahertz into 200 clocks into 1, that gives you total 40 microseconds. So, this is how you have got some numerical type of questions. So, this is how we can understand the different patterns of questions which are possible in the GATE exam 2021. So, the newly introduced type of question is multiple select questions. We must be little bit cautious in solving the questions. So, this is how we can understand the type of questions. So, the important topics here are in this subject, like you should understand what are the basics of number systems, similarly the interrupts handling and how the data is represented, and what are the types of memories which are present. These are all basics required, and how the interrupts are handled in the CPU control unit. And one more is what is the micro instruction, how it is designed, and how the instruction execution takes place, and similarly how the data is accessed from the memory. And we should also know the different registers which are involved in the ALU operations. Not only this, we should also discuss about the stack and subroutines, how the extra data can be dumped into the memory which can be reutilized whenever required, that is stack operations, and the subroutines which are required for separate programs. Similarly, how the instruction speed can be improved by pipelining technique, and finally some IO interfaces, how do you connect the devices between the memory, CPU and the input output blocks. So, these are all the important concepts which have to be understood in the computer organization subject. So, this subject has to be more dealt, or it should be elaborately dealt in the hardware perspective, design perspective, so that you can understand clearly. So, these are few points to be noted in the syllabus of computer organization which has been introduced for electronics and communication engineering. Thank you so much for your patient listening. Hope you would understand clearly all the subject, prepare well for the exam. Thank you so much.